Hello student. Today I will explain you शॉर्ट टर्म्स है, छोटे छोटे जो टर्म्स है वो एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल input tax. Registered person means the central tax, state tax and integrated tax or union territory tax charge on any supply of goods or service tax or both made to him, and includes first one is the integrated goods and service tax charge on import of goods, then the tax payable under the provision of subsection 3 and subsection 4 of section 9, and the next point is the tax payable under the provision of subsection 3 subsection 4 of section 5 of the integrated goods and service tax act. Okay, then non-taxable supply means supply of goods or service or both which is not leviable to tax under this act or under the integrated goods and service tax act. Okay, then person, जो हमने इनकम टैक्स के सैलरी का जो टॉपिक था तब भी देखी थी ये डेफिनेशन. पर्सन मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में दिया है. एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, इसको भी क्या किया है द कंपनी एक्ट ने एज अ पर्सन करके परमिशन दी है. ओके, लिमिटेड कंपनी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है, सोसाइटी एज अ डिफाइंड अंडर से सोसाइटी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है उसके हिसाब से भी. ओके, देन प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is supply. Okay, then reserve charge means the liability to pay tax by the receipt of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under subsection 3 or subsection 4 of section 9 or under subsection 3. Okay, and section 5 of the integrated goods and service tax act. Then service means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged. Okay, देन टैक्सेबल इवेंट मीन्स सप्लाई जो पॉइंट आता है, जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जो पॉइंट है उसके अंडर सप्लाई करके पॉइंट आता है. मीन्स जो टैक्सेबल इवेंट होता है, मतलब द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. इट मीन्स नो सप्लाई नो जीएसटी. ओके, the term supply has been inclusively defined in the Act. The meaning and scope of supply under GST can be understood in terms of following 6 parameters, which can be adopted to characterize or characteristics a transaction as supply. First one is supply of goods or services. Supply of anything other than goods or services does not attract GST. Then supply should be made for a consideration. Third is supply should be made in the course or furtherance of business.
Fourth one is supply should be made by a taxable person. Fifth one is supply should be taxable supply. And sixth parameter is supply should be made within the taxable territory. उसमें exemptions क्या है? One is any transaction involving supply of goods or services without consideration is not a supply. Bearing a few exemptions in which a transaction is demanded to be supply even without consideration. Then further import of service for consideration where or not in the course or furtherance of business is treated as supply. जो स्कोप ऑफ सप्लाई है जो सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 में एक्सप्लेन किया था एज पर द सेक्शन 7(1) एंड एज पर द सेक्शन 7(2) सप्लाई इंक्लूड्स क्या है सप्लाई में और एक्सक्लूड क्या है वो हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal mode, or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Second one is import of services for a consideration whether or not in the course for or furtherance of business. Okay. Third point is the activities specified in schedule made or agreed to be made without a consideration. Then the activities to be treated as a supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2nd, and where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. Okay. And supply exclude मतलब इंक्लूड क्या नहीं है सप्लाई में वो हम देखेंगे. वो आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट इज activities or transactions specified in schedule 2, and such activities or transactions undertaken by the central government such activities or transactions undertaken by the central government, a state government, or union territory. Next point is service by employee to employer in the course of or in the relation to his employment. Services by court or by court. Services by member of parliament and others. Services by sale of land or building. Okay. Then supply of goods from a place in the non taxable territory to another place in the non taxable territory without such goods entering into इंडिया. ओके. ये डिफरेंस हो गया. इसके बाद जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में दिया है कि
all forms of supply of goods or services or both, such as the first one is sales, second transfer, then barter, exchange, license, rental, lease or disposal. Okay, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Okay, sale means what? The term sale is defined under various state VAT laws. Sale means a sale of goods made within the state for cash or a deferred payment or other valuable consideration, but does not include a mortgage, hypothecation, चार्ज और प्लेज. ओके, मतलब सेल क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल. मतलब मैंने कोई भी चीज़ बेची तो वो सेल होता है, बट सर्विस जो देते हैं वो सेल नहीं होती. सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें हम सेल करते हैं, ये डिफरेंस हो गया. और उसके बाद जो हम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट अगर मॉर्गेज कुछ है तो वो सेल नहीं होता है, प्लेज सेल नहीं होता है, देन हाइपोथिकेशन भी सेल नहीं होता है. ओके, सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन. Under CGST law, sale is treated as a supply to GST. However, the definition of sale has not been provided under the GST law. Okay. Next point is जो डायरेक्टर रेमुनरेशन होता है वो पेड टू डायरेक्टर, वो कैसे होता है? अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है. रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर इज अ सब्जेक्ट टू TDS. जो हम GST देख रहे हैं उसमें हम TDS भी थोड़ा देखेंगे. मतलब क्या होता है? अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, नो GST. ओके, and remuneration paid to the director is subject to TDS under section 194J of the income tax act 1961, then taxable in the hands of company on the reserve charge basis. Okay, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन होता है उस केस में क्या होता है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन द रिजर्व चार्ज बेसिस. ओके, एंड फ्रिंज बेनिफिट जो होते हैं, द कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉई इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नॉट सप्लाई. हाउएवर फ्रिंज बेनिफिट मतलब FBT or supply of goods services and are liable to tax if not exempted as per the CBEC. Okay, the fringe benefit are transactions in furtherance of business even if supply without consideration the same are deemed supply and will attract GST. FBT reserve charge under section 9 subsection 4 of the CGST Act 2017. A reimbursement to staff is an expenses in the course or furtherance of business, and if same is against a taxable supply taken from unregistered supplier, a reserve charge mechanism will apply. Then section 2
subsection 49 of CGST Act 2017, family means the spouse and children of the person and the parents, grandparents, brother and sister of the person if they are wholly or mainly dependent of the said person. Okay. ये जो छोटे छोटे मैंने अभी एक्सप्लेन किए पॉइंट, वो क्यों किए, क्योंकि आपको एमसीक्यू में अगर आता है तो वो आप को पता होना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं. ओके. आई थिंक इतना आपको अभी फ़िलहाल ठीक है. एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एंड बाकी जो पॉइंट आते हैं इसके जीएसटी के नोटिफिकेशन या फिर सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज एंड गेट प्रोवाइडेड सर्विस टू स्पेसिफाइड पर्सन वगैरह, ये पॉइंट अभी आपको ज़रूरत नहीं है. फ़िलहाल अभी जो इतना हुआ है वो बस है. ठीक है.